Sahara is now 42.5% owner of the Force India team. Vijay Mallya also retains 42.5%. And that is wow, that is amazing. That's really and truly amazing news. But the only thing is, I hope they get some Indian drivers in. I hope to God they get some Indian drivers in. I hope we'll see Karan Chandok or we will see Narayan Karthikeyan driving around in a Force India car. उम्मीद ये करते हैं कि नारायण कार्तिकेयन या Karan Chandok शायद ड्राइवर बने. Hopefully, because up till now you've only had, you've only had foreigners. For us foreigners, all right, driving Force India cars. You've never really had an Indian driver. Hindustani driver कोई नहीं आया है अभी तक Force India car का. You've had at the moment, of course, you've got Paul Di Resta and you've got Adrian Suttle. Prior to that, you've also had other drivers, but they've all been foreigners. They've not been Indian. Now, this is our Delhi correspondent Bridgmohan talking to Saharasri, that is Mr. Subrat Roy Sahara, otherwise known as Saharasri, and the reasons why he decided to invest or buy out Force India. He's not bought it out, but he's now a partner with Vijay Mallya. Can you imagine the unlikeliest of combinations? One had never thought that these two would actually work together, but they have. So which clearly means just about anything is possible. Just about anything is possible. Now, which means that as far as Sahara is concerned, Sahara is now at the cutting edge of sports. They're in cricket, they're in hockey. I don't know whether they've entered soccer as yet, and they are, of course, now sponsors and owners of a Formula One racing team. Let's take a look at Mr. Subrat Roy Sahara speaking to our own Bridgmohan. सारशी, सबसे पहले चैनल 1 और लेमन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आपने फिर से एक सबूत दिया है कि आज भी देश में जज्बाती लोग हैं, ना कि सिर्फ व्यवसायीकरण का काम कर रहे हैं. शुक्रिया. सारशी, सबसे पहला सवाल, आपके पास बहुत कम समय है और आपने हमारे चैनल को समय दिया, सबसे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. पहला सवाल हमारा ये है, दर्शक ये जानना चाहते हैं, फोन लाइन पर उनका एक प्रश्न आया है कि सहाराश्री ही ऐसा काम क्यों करते हैं देश में, बल्कि और भी व्यावसायिक लोग हैं वो काम ऐसा नहीं करते हैं हमेशा, वो क्यों दिल से सोचते हैं? ये हमारे एक दर्शक से सवाल आपसे पूछा है. मैं अपना जवाब तो दे सकता हूँ, बाकी जवाब के लिए आपको उन सब लोगों के पास जाना होगा. वो क्यों करते क्यों नहीं करते मैं नहीं बता पाऊंगा. हम लोग अपनी बात में जानते हैं. सारशी, एक सवाल, आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत छोटे से एक लेवल से शुरू करके आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपकी मेहनत, आपने अपने संस्थान को एक परिवार हमेशा कहा है. इस परिवार के साथ आज आप इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंच चुके हैं. फॉर्मूला 1 रेस, ये इसकी शुरुआत हो रही है. क्या उद्देश्य रहा इसको, इस चीज की शुरुआत करने के लिए? देखिए, हमने बातचीत की थी स्पॉन्सरशिप के लिए, फिर मैंने जानने की कोशिश की. जानने के बाद ये महसूस किया कि ज्यादा खुशी होगी अगर हम इस टीम के साथ जुड़ जाए, एक जिंदगी भर के लिए एक मालकियत हो जाए. मालकियत होने के बाद क्या होता है, आदमी की जज्बा ज्यादा उसमें जुड़ जाता है और एक प्रयास ज्यादा ही बेहतर होता है. लोग उसमें एक कहा जाता है तन्मय से वो लग जाते हैं, तो उससे भला होता है. तो हम लोगों ने ये सोचा कि देश के लिए अगर हम लोग नाम ज्यादा पैदा करते हैं तो इसमें न केवल संस्था के लाभ है, देश का भी लाभ बहुत है. और देश का लाभ है तो संस्था का भी लाभ है. एक सवाल है सारशी, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग हैं जो आज देश के बड़े बड़े मुकामों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एकमात्र अगर हम बात करें तो सहाराश्री की वो शख्सियत मानी जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में सोचते हैं. ये फॉर्मूला 1 रेस को भी आपने ग्रेटर नोएडा में इसमें ये फॉर्मूला रेस होगी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ आपने एक बहुत बड़ा एहसान किया है. तो ऐसा क्यों है कि ये जज्बा यूपी के लिए सिर्फ बाद में दिखता है? नहीं, देखिए, यूपी में बड़ा हुआ हूँ, यूपी में सारा का जन्म हुआ है और हम यूपी के प्रति हमारा एक बहुत बड़ा कृतज्ञता हमेशा रहेगा. ये तो यूपी को आगे बढ़ाने में जब भी कोई मौका मिलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है. मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक इत्तेफाक है कि नोएडा में ट्रैक बना, हम लोग इसके साथ जुड़ गए, एक इत्तेफाक है. सारशी, एक आखिरी सवाल, आपने जिस प्रकार से खेलों के लिए भी सहारा सबसे ज्यादा ऐसा एकमात्र संस्थान मोला जाता है जो कि खेलों को बहुत उत्साह देता है, आपको लगता है यूथ के बारे में आप ऐसा सोचते हैं? कारण क्या है, क्या आज भी आपको लगता है कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है देश की? युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और मुझे खास इस जुड़ने की खुशी इस बात की है कि भारत की युवा इस स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. लोग जान नहीं रहे इस बात को, तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें बहुत ज्यादा एक देखने का, जुड़ने का बहुत ज्यादा खुशी होगी. उसको युवा शक्ति को ये प्रेरणादायक होगा.
साराशी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So $100 million, that's right. $100 million. That's the investment. All of you remember, of course, that the team was formed way back in 2007 when it was the Spiker Formula One team and later renamed Force India. The Mall family owns the remaining 15%. That's right, 85% of course is now owned, shared between the Sahara Group and Vijay Mallya's group, that is between Mr. Subrat Roy Sahara, otherwise known as Saharasri, and of course Dr. Vijay Mallya. The flamboyant Vijay Mallya will of course remain the principal, and Mr. Subrat Roy Sahara or Saharasri will be the chairman of the new company. And hopefully the new investment will mean that the Force India team perhaps might actually become a force to be reckoned with in the coming seasons. At the moment, of course, it is placed 6th in the Constructors' Championships before the Korean Grand Prix, which is next week. Which is this coming Sunday. And of course, the Indian Grand Prix is scheduled to be held on October the 30th at Noida. Now, that would be very, very interesting indeed. So, which means they'll be racing under the Sahara Force India colors. So, now Sahara has a Formula One team and they've got an IPL team. What remains to be seen is whether or not the Sahara chairman will realize his dream of owning an English Premier League team, an English Premier League football team. Whether or not he will realize that dream as well. Because when Liverpool was